Hi guys, I'm Alyssa. This is Gus. Sean's not here, but this kind of looks like him. And this is Internet Rabbit Hole Daily. And I am here to basically get the rundown on this farmers' protest. I've done a few reactions with Sean about it, but I haven't. So yeah, you guys kind of know I was a bit MIA there from the channel for a bit. So when this whole thing kind of started, Sean was doing all these reactions on it and stuff like that, and I don't know what the frick I was doing, but I was doing my thing, whatever. I had to figure some things out, you know, and so here I am, and I need basically just a rundown of this information because it can be really confusing, and I just kind of want to know as much as I can going into sort of new information about it and new reactions about it. So I'm gonna watch some older stuff here, and this one is by Dhruv Rathi, and it's called Farmers' Protest in Delhi, explained by Dhruv Rathi. So let's just get into it. नमस्कार दोस्तों, 2014 से पहले जब भी प्रोटेस्ट होता था, हमारे देश का मीडिया सरकार पर सवाल उठाता था कि सरकार ने क्या यहां गलत किया है जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। 2014 के बाद जब भी देश में प्रोटेस्ट होता है तो मीडिया सवाल उठाता है प्रोटेस्टर्स से। So the media were questioning the protest. So okay, so like the protest had happened. Okay, wait, what? 2014. This is like going way back. Sorry guys, I'm doing my best. Like कि भाई क्यों इतने मिसगाइडेड हो प्रोटेस्टर्स कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे। आइए बात करते हैं दोस्तों, आज के दिन चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में। देश भर में 400 से ज्यादा फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस साथ में आई हैं प्रोटेस्ट करने के लिए सरकार के द्वारा पास किए गए फार्म बिल्स के अगेंस्ट। November, I had no idea there's like 400 farmer organizations. Holy, that's a lot. I wonder then, are those, I guess, unions? किसानों ने इनडेफिनिट स्ट्राइक का ऐलान किया था दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए। मेनली पंजाब और हरियाणा से, लेकिन कुछ किसान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट के रिस्पांस में सरकार का और मीडिया का जो रिएक्शन रहा है बहुत ही शॉकिंग है, बड़े सवाल खड़े करता है देश की डेमोक्रेसी पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर। तो क्यों ये प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं, क्यों ये पंजाब पर इतना ज्यादा फोकस्ड है, और क्या ये स्थिति दिखाता है हमारे मीडिया की और सरकार की? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले so far I just want to say really good job on this video. Like it's just the pace is on my pace that I have enough time to read and stuff like that, and so far I'm somewhat able to follow along. We haven't even gone into it, so we'll see what happens. ये चीज आप जानते ही होंगे क्यों ये प्रोटेस्ट चलने लग रहे हैं, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने फार्म लॉज पास किए थे। देश भर में ढेर सारे फार्मर्स को ये लॉज बिल्कुल पसंद नहीं आए। क्यों नहीं पसंद आए, इस चीज को मैंने इस पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लॉ के बारे में डिटेल में बात करी है कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स हैं जो फार्मर्स को पसंद नहीं है और क्या उन्हें डर है इस लॉज से। लिंक इसका नीचे। This is just missing in like, it's filling in information that was just like basic information that I wasn't even up to speed on. So the fact that the bills were actually passed a couple months ago, like during one of our reactions, I'm like, oh, I thought they hadn't passed the bills, and they were like, oh, we don't want these bills passed. And then Sean's like, no, they've already been passed. I'm like, okay. So it's like these details are what I'm looking for. So wow. So it's been like 2 months. So yeah, I guess they started protesting at the end of November, he had said. मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में बात करी थी कि किस तरह से अनडेमोक्रेटिकली मोदी सरकार ने फार्म लॉज को राज्यसभा में पास किया। Sean and I wanted to watch that one of how that even happened that they got the bills passed. मैंने एक्सप्लेन किया है कि फार्मर प्रोटेस्ट की रूट कॉज क्या है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम पर। जब से बिल्स लॉ बने हैं, फार्मर्स अलग अलग तरीकों से अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं, और ये दिल्ली चलो मार्च इनका लेटेस्ट जरिया है प्रोटेस्ट करने का सरकार के अगेंस्ट। सरकार ने लेकिन पूरी कोशिश करी कि इस मार्च को रोका जा सके, बैरिकेड्स लगाकर, वाटर कैनन्स चलाकर, टीयर गैस फेंक कर, और एक जगह तो लिटरली इन्होंने हाईवे की खुदाई कर दी। Okay, wait, who did set up tear gas?
बैरिकेड्स लगाकर। Oh, okay, sorry, I missed. He's like the government, yeah, who was doing all these horrendous things. इस मार्च को रोका जा सके, बैरिकेड्स लगाकर, वाटर कैनन चलाकर, टीयर गैस फेंक कर, और एक जगह तो लिटरली इन्होंने हाईवे की खुदाई कर दी। Yeah, I saw that in one of the videos. Oh my gosh. Okay, that's where I was like, are you serious? Are you serious? Like you can't even I don't know. It's just like you're not in support of sort of like these farmers and like their livelihood, and that's what they're kind of protesting about, that being jeopardized. And it's like, really, you're gonna like dig up a highway, like costs, you know, thousands of dollars to dig up a highway, and then you have to rebuild that highway after and use resources into that. Like, it's like, come on. जो चल के आ रहे हैं वो That's just like next level. हरियाणा में कई जगहों पर सेक्शन 144 लगाया गया, बस सर्विसेज को सस्पेंड किया गया, 100 से ज्यादा। I'm sure they just climbed over the trench. I don't think the trench stopped them, but maybe it did. Because these farmers are pretty stealth. Like yeah, it's insane what they're doing, and they're just like smiling, and they're like so strong. इन मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। अपेरेंटली खबर में आ रहा है 500 से ज्यादा फार्मर्स को अरेस्ट किया गया तमिलनाडु और कर्नाटका में। इनफैक्ट 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से परमिशन भी मांगी कि वो 9 स्टेडियम्स को टेम्पररी जेल्स में कन्वर्ट कर दे, जहां पर फार्मर्स को और प्रोटेस्टर्स को डाला जा सके। You're gonna protest people walking, or protesters, sorry. You're gonna arrest people just that walk to a different country? I don't know. I get that they're like in crowds and stuff like that, but like I don't know. It's just I don't know. दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के अंदर आती है, बीजेपी के अंदर नहीं आती, तो इन्होंने इस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर यहां भी बीजेपी की सरकार होती तो शायद आज के दिन ये किसान इन स्टेडियम जेल्स के अंदर बंद होते। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर अलाउ ही नहीं किया गया कि फार्मर्स गैदर हो पाए प्रोटेस्ट करने के लिए। They're not even letting them just gather and like peacefully protest. और पोस्टर की प्रिंटिंग तक को रुकवा दिया। जो Wait, they put a stop on the printing of pamphlets and posters that were in favor of the protest. Come on, that's next level. That's just so controlling, in my opinion. Like, it's like, okay, if you don't have to like side with their perspective, but come on, it's just like one of the freedoms that we have is to be able to protest. And it's harmless pieces of paper, it's pamphlets. Like, I don't understand. फेवर में छपाए जा रहे थे, लेकिन हमारे किसान भाई बहुत डेडिकेटेड हैं और अपने प्रोटेस्ट पर डटे रहे। जहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेड्स के ऊपर से कूद कर गए, कहीं पर धकेल के जहां पर हाईवे खोदा गया था वहां पर उन्होंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया और कुछ I told you I was like I knew they would have gotten through the trenches. I knew that wasn't going to stop them. डालने में उस गड्ढे को भर दिया ताकि वापस उसके ऊपर से चल के जाया जा सके। They're so smart. जहां पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाए, वहां पर कुछ किसान भाइयों ने जाकर वहां पर गाड़ियों के ऊपर से कूद कर इन्होंने वाटर कैनन को स्विच ऑफ किया। हालांकि जिस इंसान ने ऐसा किया उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया सरकार ने। इस हद तक तरीके इस्तेमाल किए गए किसानों को रोकने के लिए फिजिकली सरकार के द्वारा, लेकिन फिजिकली किसानों को रोकना पॉसिबल नहीं है। एंड में सरकार कुछ नहीं कर पाई और हमारे किसान भाई दिल्ली पहुंच गए अपनी मार्च करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन इन फिजिकल तरीकों से ज्यादा खतरनाक है जो माइंड गेम्स सरकार का बिकाऊ मीडिया खेल रहा है किसानों को बदनाम करने में। फेक मीडिया। Dun 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 dun. I think I have a suspense sound effect here. Okay, wait. No, that is not what we want. Sorry. It's that one. Sorry. I have not memorized these sound effects. The fake media. आपको याद होगा दोस्तों 2011-12 में जब एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी अन्ना हजारे की, तब मीडिया ने क्या अहम रोल निभाया था प्रोटेस्टर्स की डिमांड उठाने में, आम जनता के फेवर में आवाज उठाने में। आज के दिन मीडिया इतना बिक गया है कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट रोल प्ले करने लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया उस टाइम पे बिकाऊ नहीं था,
उस टाइम भी होगा बिकाऊ, लेकिन आज के दिन जितना बिक चुका है मीडिया, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। प्रोटेस्टर्स की डिमांड उठाने की जगह मीडिया प्रोटेस्टर्स को ही डिफेम करने में लगा है, बदनाम करने में लगा है। So now is he saying the media कहीं पर अर्बन swung to the other side funded. where they used to be? I think he was saying they used to kind of be in favor of protests and things like that, but now they're just in favor of the government, it seems. कि 2011 की एंटी करप्शन मूवमेंट में बीजेपी आरएसएस का एक काफी बड़ा रोल रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि मीडिया ने उसको हाईलाइट किया हो या उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया हो कि ये प्रोटेस्ट तो बीजेपी फंडेड हैं, ये सारे बीजेपी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था ना। आज के दिन जब कुछ कांग्रेस वाले प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं, ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं, तो कैसे इन्हें कांग्रेसी बताया जा सकता है? जी न्यूज ने हैशटैग चलाया, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट हाईजैक्ट, हैशटैग आंदोलन में खालिस्तान, ये दिखाने के लिए कि कैसे खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करने लग रहे हैं। टाइम्स नाउ ने हैशटैग चलाया, हैशटैग किसान कानून क्लैश, ये कहा कि ऑपोजिशन फार्मर्स को भड़काने लग रहा है। फार्मर्स की मास गैदरिंग से कोविड-19 का स्प्रेड बढ़ सकता है, जबकि हैदराबाद में जो म्यूनिसिपल इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए बीजेपी के लीडर्स आते हैं, कोई चिंता नहीं होती कोविड-19 के स्प्रेड की। CNN न्यूज ने दिल्ली चलो को एक वॉर क्राई बताया और कहा कि कौन फार्मर्स को मिसलीड करने लग रहा है। न्यूज 18 इंडिया में अमीश देवगन ने टैगलाइंस चलाई कि कांग्रेस ने किसानों को उकसाया है। रिपब्लिक टीवी पर Sorry, but it's also in my opinion, like, I don't know, I think those farmers with COVID, they're putting themselves at their own risk. Like, it's like, and this virus thing has been going on for months and months and months. It's just like this. It's like they can't, this is their livelihood. They can't wait like a year or 2 or 3 years to protest. These bills just got passed a couple months ago. Sorry, but they're just going to have to, you know, I guess take the risk and stuff. And the virus has already been spread, I guess. And I don't know, you can't blame them for, I don't know. Yeah, I think they were using the whole COVID tactic, obviously, to, okay, Gus is just sort of uncomfortable here. Yeah, they're using the whole COVID thing like against them and stuff and trying to say stuff. स्वामी ने भी यही किया। इनफैक्ट दोस्तों, ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल पे मिसलेड शब्द बहुत सुनने को मिला कि भाई फार्मर्स को किसी ने मिसलीड किया है, तभी ये प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। ये तो बहक गए हैं किसी कांग्रेसी के इशारों में आकर, कहीं अर्बन नक्सल, कहीं खालिस्तानियों के इशारों में आकर, जैसे कि इनका खुद का तो कोई दिमाग ही नहीं है, इनकी खुद की कोई समझ नहीं है। अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मतलब किसी ने मिसलीड किया हुआ है। सिमिलरली सोशल मीडिया पर भी बीजेपी सपोर्टर्स और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा एक बहुत बड़े स्केल पर फर्जी खबरें फैलाई गई, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। Yeah, social media is so easy now, I feel like. बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक इंसान ने ग्रीन कलर का टर्बन पहन रखा है और ये एलिज किया जा रहा है कि एक इंसान है जो अपने आप को एज अ सिख डिसगाइज कर रहा है इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसे एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था जिसे प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। इस पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट लगाया गया फेसबुक प्रोफाइल का जिसपे नजीर मोहम्मद नाम के इंसान का नाम है, ये दिखाने के लिए कि ये देखो ये तो मुस्लिम इंसान है, ये अपने आप को सिख बना रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। रियलिटी क्या है? ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेक ने बताया कि जो प्रोटेस्ट की पिक्चर है, फार्मर की पिक्चर है, ये फार्मर प्रोटेस्ट से पहले की पिक्चर है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट फेक न्यूज फैलाई जा रही है बस किसानों को बदनाम करने के लिए, धर्म के नाम पर भड़काने के लिए। एक और इंसिडेंट में बीजेपी की प्रीति गांधी, जो कि बीजेपी की सोशल मीडिया की नेशनल इंचार्ज है, इन्होंने एक 15 सेकंड की वीडियो क्लिप ट्वीट करी जिसमें कि प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स उठाए जा रहे हैं। ये कहती हैं कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखो ये खालिस्तानी स्लोगन उठ रहे हैं तो पक्का खालिस्तान स्पॉन्सर्ड है। बहुत से लोगों ने बिलीव भी कर लिया। Sorry, I missed. I'm not really sure what the Khalistani is referring to. You guys are gonna have to tell me in the comments and stuff. It's just like it's hard to pick up on everything, and it's been already a very long time, so I just don't want to have to go back at all. So just to sort of explain what he's referring to when he says like pro-Khalistan. लेकिन रियलिटी क्या थी? ये एक पुराना वीडियो था, ये वीडियो इंडिया का था भी नहीं, यूके का वीडियो था ये। ऐसी ही एक और फर्जी खबर कंगना रनौत तक ने ट्वीट करी, एक फोटो बुजुर्ग औरत की जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में भाग ले रही थी। इसमें गलत तरीके से क्लेम किया गया कि ये वही बुजुर्ग औरत थी जिन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया था 2019 में सीएए के खिलाफ। दोनों औरतों में, दोनों दादियों में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन सिमिलर सी दिख रही थी। इसी रीजन को लेकर शेयर की गई कि देखो जो लोग सीए एनआरसी के खिलाफ बोल रहे थे वही लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी बोल रहे हैं, ये इनकी कंस्पिरेसी है। अब एक दफा के लिए अब ये भी इमेजिन कर लो दोस्तों, कोई इक्का दुक्का इंसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है फार्म बिल्स के अगेंस्ट, वो I just like it's crazy how they've been able to, I guess, manipulate people with this kind of propaganda and stuff. Like
it's harder to believe that this like thing is like this whole like big conspiracy. It just, to me, it's just like way more clear to be like, no, it's just farmers that this bill got passed and they like it's not working for them, and the system was a certain way for so long, and all of a sudden they made all these like new regulations that changed things up. Like it's crazy. Yeah. रिपोर्टर निकल भी जाता है, तो क्या ये रीजन हो सकता है पूरी मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने के लिए, स्पेशली तब जब हम सब जानते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट का इंडिया में ऑलमोस्ट जीरो सपोर्ट है। नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक बहाना है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सारे प्रोटेस्टर्स को डिफेम करने के लिए। रियलिटी में से हो क्या रहा है दोस्तों, देश में डेमोक्रेसी नीचे गिरती जा रही है। ये चार्ट देखिए, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के द्वारा बनाया गया चार्ट है, जिसमें दिखा रखा है कि देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इंडेक्स, सिविल लिबर्टीज का इंडेक्स, एकेडमिक फ्रीडम का इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स, ये सारे इंडेक्सेस में इंडिया की रैंक, इंडिया का स्कोर नीचे गिरता रहा है 2014 के बाद से। इनफैक्ट आज के दिन इतनी बुरी हालत है जितनी बुरी हालत इमरजेंसी के वक्त थी इंदिरा गांधी के अंदर। तो एजेंडा बड़ा क्लियर कट है कि ये दिखाया जाए ये जो किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, ये किसान नहीं है, पहली चीज तो ये खालिस्तानी है, अर्बन नक्सल से जुड़े हैं। Okay, so they're just like labeling them. So Khalistan must have been obviously this like a really unfavorable type of movement. I don't know what type of thing. I don't want to say things that I don't really know, but they're just like accusing them of being something that they're not, something maybe bad. And it just reminds me of, you know, sometimes when people get labeled, they have different opinions and then they just like sort of get these labels. I don't know, the one that just like comes to mind right now is sort of like say questioning certain things, or say like questioning certain, maybe you question just certain things about the government, like, oh, maybe this is happening or some intentions are not good or something. And then it's like, you're a conspiracy theorist, you're a conspiracy theorist or something like that. Like they're just like calling them something, you know, offhandedly to sort of discredit them. And that's what it seems like this is happening to the protesters. टुकड़े गैंग हैं, एंटी नेशनल हैं, वही सारी चीजें जो इन्होंने पुराने प्रोटेस्ट के दौरान भी इस्तेमाल करी हैं। जैसे सीए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, देश भर से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन दिखाने की ये कोशिश करी जा रही थी कि लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्शन पॉपुलेशन का प्रोटेस्ट करने लग रहा है। वही अर्बन नक्सल लिबरल लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट चलने लग रहे थे, वहां पर भी ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये ऑपोजिशन स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट थे। Oh, so they were trying to make it look like, oh, it's this specific sector of people or something, and then something happening. कल को आप किसी भी रीजन की वजह से सरकार पर सवाल उठाएंगे, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको भी इनकी जो पूरी मशीनरी है, इनकी बिकाऊ मीडिया, इनका आईटी सेल और इनके सपोर्टर्स, आपको भी इसी तरह से ही बदनाम करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे, और ये अनेक शब्द इस्तेमाल करेंगे आपके लिए। एंटी नेशनल, right, that's what I was talking about, like the labels, टुकड़े गैंग, कुछ भी हो सकता है। Yeah. लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली पुलिस ने फाइनली किसानों को अलाउ कर दिया है कि वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस कैरी आउट कर पाएं दिल्ली के अंदर। बीजेपी ने अपनी इच्छा जताई है कि अनकंडीशनल टॉक्स करने के लिए तैयार हैं किसानों के साथ, अपनी डिसएग्रीमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी है आरएलपी, जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में है। इन्होंने कहा है कि अपनी अलायंस तोड़ सकते हैं। So that's interesting too. Like what I didn't even know was this like trying to even just suppress the protests in general initially. I never really knew that at all. I just thought that like they're protesting and the government's upset that, you know, they don't want to retract the bills or whatever and stuff. And then it's like, oh, this protest is getting out of hand and things like, it's like, no, they weren't even sort of letting the people speak. They tried to suppress that and not even let them protest. And that's just like a human right. So. की दी है अगर बीजेपी ने किसानों की नहीं सुनी। ये दूसरी पार्टी होगी अकाली दल के बाद। पंजाब में अकाली दल बीजेपी के साथ एक अलायंस में पार्टनर हुआ करता था, उन्होंने भी अपनी अलायंस तोड़ दी थी फार्मर्स बिल पास होने के बाद। और कितनी भी कोशिश कर ली जाए किसानों को बदनाम करने की, रियलिटी तो यही है कि यही किसान लोग पुलिस वालों की मदद करने लगे, खाना खिलाने लगे, वही पुलिस वाले जो इन पर डंडा चला रहे थे। किसानों की ये फोटो जिनमें पुलिस वालों को खाना खिलाने लगे। I was telling Sean that last night too. I'm like, that's just total, just abolishment of the ego right there. To like, man, like I can't even do that when I'm like, when Sean and I are having just like little like disagreements or arguments where I'm like so annoyed at him. Like it's so hard for me to just like
give it up and be like, you know what, let's just like sit and like have dinner and stuff. Like I'm so stubborn a lot of times when it comes to that. Okay, Gus is being a little bit stubborn. So yeah, oh my gosh, this just like shows the character, and I don't know, it's like for people to say that these people have these like other intentions or something like that, like come on, like who looks really shady here? Who looks shady? The government kind of looks shady, just saying. ये किसान जो प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, इनका कोई बाहर से कोई लिंक नहीं है, ये खुद अपनी मन मर्जी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक सवाल ये भी उठाया गया था यहां पर कि ये सिर्फ मेनली पंजाब के किसान ही क्यों प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है तभी कांग्रेस की कंस्पिरेसी आ रही है यहां पर, ये भी नैरेटिव बिठाया जा रहा है लोगों में। लेकिन रियलिटी है दोस्तों, मोस्टली पंजाब और हरियाणा के किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं क्योंकि इन्हीं को ही एमएसपी का बेनिफिट मिलता है। पंजाब हरियाणा में एमएसपी का बेनिफिट मिलता है, जबकि बाकी और स्टेट्स में किसान एमएसपी का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। किसानों की डिमांड्स बड़ी सिंपल है, सरकार इन्हें रिटर्न अश्योरेंस दे एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, और जो रिसेंटली 3 फार्म लॉस पास किए गए हैं सरकार उन्हें विड्रॉ कर ले। किसानों का मानना है कि अगर इन फार्म लॉस को अप्लाई किया गया तो धीरे-धीरे That's the thing too, like what are their intentions? They just want to go back to how the things were before. They're not trying to present this whole new idea like, "Ooh, we have this like schemy plan, like why don't you guys?" No, it's just like, can you just take away what you like changed and added? We just want to do things how we've been doing them. टाइम जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं वो मोनोपोलाइज कर लेंगी एग्रीकल्चर सेक्टर को। जो प्रोक्योरमेंट होता है क्रॉप्स का वो इन कंपनीज के हाथों में आ जाएगा और कंपनीज इन किसानों को और भी कम दाम देंगी जितना आज के दिन इन्हें मिलने लग रहा है। इससे जो ऑलरेडी इतने किसान हमारे देश में मुश्किल स्थितियों से गुजर रहे हैं, कितने किसान खुदकुशी भी करने लग रहे हैं, उनकी हालत और भी बद से बदतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। एक बढ़िया म्यूचुअल फंड्स की ऐप है जिसमें आप अब बस अपना गोल सेट करेंगे कि आपको क्या करना है, नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने, कितने टाइम तक, और इस ऐप का एआई सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए। पसंद आता है मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com। This fellow's video will be linked in the description. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। I really appreciate this video by Drew Rathy. You guys should go check him out. Go subscribe. That was really informative for me. I just like, there's so many more extra details and specific things. Like this thing is just multifaceted and really complicated, but I really had way more of an understanding from watching this video of the situation and stuff like that. And I know there's like all these different sort of sides to the situation, and then some people would say like, oh no, this video was biased and there's this. I don't know the truth, but like the government just looks real shady to me at this point. There's more to sort of learn, stuff like that. And just number one, it is freedom and it's a right to just be able to protest, to just be like, hey, I don't agree with this. I think it should be this way. I want to speak up and say how I feel. Like that's just a human right. And so for the government, you know, if that was true and they were really trying to suppress that and didn't even want the people to protest in the first place, then I have a problem with that. So anyways, this has been quite a long video. So if you made it this far, I really appreciate you watching. And if you want to stay tuned for more, make sure you hit the subscribe button, hit the notification bell so you can get updated every time we upload a new video on Internet Rabbit Hole Daily here. If you enjoyed this video, please let us know by clicking that thumbs up button and tell me what you thought in the comments below and try to fill me in on the situation, because I just want to be up to speed with everything and I like chatting with you guys. So thank you. Love you guys. Mwah. Action Figure Sean says bye, and this is Internet Rabbit Hole Daily signing off. Bye guys.